So dear students, welcome back. So continuing our lecture series on vibrational spectra. In our last lecture, we have discussed two very important concepts. The first concept is the Raman activity of the vibrations, and the second is rule of mutual exclusion. So दो important concepts को हमने last lecture में discuss किया था. एक था अपना कि कौन से वाइब्रेशंस आपके रमन एक्टिव होंगे और कौन से वाइब्रेशंस रमन इनएक्टिव होंगे. उसके साथ साथ हमने और एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, वो था आपका रूल ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूजन, जिसमें ये कहते हैं कि अगर आपका मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री है तो उस केस में आपका अगर कोई वाइब्रेशन रमन एक्टिव होंगे तो वो आपका आईआर इनएक्टिव होंगे, और अगर कोई वाइब्रेशंस रमन इनएक्टिव होंगे तो वो आईआर एक्टिव होंगे. ये आपकी म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहते हैं, लेकिन कंडीशंस ये है कि दैट द मॉलिक्यूल शुड हैव सेंटर ऑफ सिमेट्री. तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा, अबाउट द वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा. कैसे हम वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा को हम डिस्कस कर सकते हैं. सो the vibrational Raman spectrum or spectra, the structure is not that much complicated. So to discuss the vibrational Raman spectra now, let's consider the energy equation for the vibrational mode. So for vibrational mode, we have the expression, हमारे पास ऑलरेडी एक एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी वी हैव डिराइव्ड जब हम वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी डिस्कस कर रहे थे, एंड दैट इक्वेशन इज एप्सिलॉन, दैट इज द एनर्जी इन फॉर्म ऑफ वेव नंबर, इज इक्वल टू ओमेगा ई बार म्यू प्लस 1/2 माइनस ओमेगा ई बार एक्स ई म्यू प्लस 1/2 स्क्वायर centimeter inverse. So this is the energy of the equation for the vibrational energy. Now here we know that this omega E bar is the equilibrium vibrational frequency, and this XE is the enharmonicity constant, and harmonicity constant, and this mu we know that this is the vibrational quantum number, और इसका वैल्यू हमारा होता है 0, 1, 2, 3 and so on. So these are the important terms used in this equation. Now the selection rule, we also know that the selection rule is, and again, now another important point is that this equation is perfectly general, and this equation is applicable to any molecule having any shape or any nature of vibration. So this equation is a very general equation, and it is applicable to any molecule irrespective of the shape or the nature of the vibration. Similarly, in case of vibrational Raman spectra, the selection rule is also general, and the selection rule is somewhat very similar to what we have the selection rules for the vibrational spectroscopy. And the selection rule, we know that delta mu is equal to, that is delta V is equal to 0, plus minus 1, plus minus 2, and onwards. So the selection rule is similar for both vibrational as well as Raman spectroscopy. In again here, the probability where our delta mu is equal to plus minus 2 or plus minus 3 and so on, this particular probability of the transaction decreases rapidly. It means that only the first two transactions where the transaction is taking
place by the changing the value of V, that is the energy level 0 or +-1 is only favorable. तो आगे जैसे हम बढ़ेंगे +-2 +-3, तो इनका जो probability है, probability of undergoing transaction by +-2 +-3, or I can say the probability is decreasing rapidly. So हम focus करेंगे सिर्फ हमारे जो fundamental transactions हैं, where our value, where our transaction is taking place from V is equal to 0 to V is equal to 1. Now let's move forward, and again for our Raman active mode, अब हम Raman active mode देखेंगे, उनके लिए हम कैसे equation निकाल सकते हैं. So for Raman active modes we can apply the selection rule. अब हम एनर्जी इक्वेशन पे जब हम सिलेक्शन रूल्स को अप्लाई करेंगे, अप्लाई द सिलेक्शन रूल्स फॉर द एनर्जी लेवल expression and then obtain the transaction energies. So this again we have already derived the three important equations when we discussing the vibrational spectroscopy, and here we know that जब हमारा transaction होता है from V is equal to 0 to V is equal to 1, that is delta E, इसको हम कहते हैं fundamental absorption. That is the energy of the fundamental absorption. And again, this delta E is equal to omega E bar 1 minus 2 xe centimeter inverse, when your transaction is taking place from V is equal to 0 to V is equal to 1. Now, यहाँ पे हमारे पास दो और important concept arise हुआ था, जिसमें हमने देखा था कि अगर आपका transaction V is equal to 0 to V is equal to 2 level पे जाते हैं, तो इस लेवल को या इस ट्रांसैक्शन को हम कहते हैं ओवरटर्न. So delta E overturn, and this is equal to 2 omega E bar 1 minus 3 xe centimeter inverse. And the third important term we have discussed it while discussing the vibrational spectroscopy is the hot band. And hot band is where your transaction is taking place from V is equal to 1 to V is equal to 2 or onwards. And usually इसको हम कहते हैं hot bands. So hot band, delta E hot band, and the equation or the transactional energy is equal to omega E bar 1 minus 4 xe centimeter inverse. So this is what very similar to what we have discussed during our vibrational spectroscopy. तो ये बिल्कुल similar है vibrational spectroscopy की तरह. Now again, in case of Raman spectroscopy, we can say that the Raman scattered light of low intensity we can ignore here. So the low intensity means the overtone and the hot band. So we will not focus on these two types of transaction, that is the overtone and hot band, because we know that the intensity of these lines will remain very low, because the probability of this kind of transaction is also very low. So we will restrict our discussion to the very important one, that is our fundamental absorption. Means when your transaction is taking place from mu is equal to 0 to mu is equal to 1. Therefore, following our fundamental absorption, from this absorption, that is V is equal to 0 to V is equal to 1, where our delta is equal to omega E bar 1 minus 2 xe centimeter inverse. And following this equation, we would expect that
the Raman lines to appear a distance from the exciting lines. Already we have seen, जैसे कि हमने रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में देखा था कि हमारे पास एक एक्साइटिंग लाइन आता है और उसके लेफ्ट में हमारे पास स्टॉक लाइंस बनते हैं, राइट में हमारे पास एंटी स्टॉक लाइन बनते हैं. अगेन हियर आल्सो हमारे पास क्या होगा, एक एक्साइटिंग रेडिएशन या एक्साइटिंग लाइन होगा, जैसे कि इसको हम म्यू एक्स ई एक्स लिखेंगे. तो उसके साइड में क्या होगा, हमारा यहाँ पे वाइब्रेशनल रमन लाइंस भी अपीयर होंगे विद रेस्पेक्ट टू दिस एक्साइटिंग लाइंस. And each of these lines will corresponds to active fundamental vibration. तो ये lines अब हमारे fundamental vibrations को बता देंगे, ठीक है. And again, if we have to express these in terms of wave number, then we can write mu bar fundamental. If we have to evaluate the Raman shift, then mu bar fundamental is equal to, we have to write, हमें इसको लिखना होगा with respect to the exciting radiation. Therefore I can write mu bar ex, that is the wave number of the exciting radiation, plus minus delta E fundamental. Delta E fundamental, that is the energy of our fundamental absorption in terms of centimeter inverse, that is in terms of wave number. So ye jo with respect to our this exciting radiation, yeah, exciting incident radiation, the frequency of the incident radiation, we get Raman vibrational Raman lines on the both sides. Either on this side is our anti-stock, yeah, anti-stock lines. On the left side we have stocks line. तो इस तरह हमें vibrational Raman lines मिलेंगे. Now here we have two sign. One is our positive sign and another one is our negative sign. Now this positive sign will give us, positive sign means when your delta mu fundamental is equal to delta mu bar ex plus delta E fundamental, then this one will give you the anti-stock length. Anti-stock length. Anti-stock lines means the lines which are appeared on the right side or the higher frequency side of your exciting radiations. Now the negative sign, that is mu bar fundamental, is equal to mu bar ex minus delta E fundamental, will the negative sign will give you the stocks line. ये आपको क्या देगा, stock lines. Stock lines means the lines which appears on the lower frequency side of your exciting radiation. Now usually what will happen here is, in case of vibrational Raman spectrum, the anti-stock lines, that is the lines which have higher frequency with comparison to our exciting radiations, these anti-stock lines usually observe too weak. ठीक है. तो ये जो एंटी स्टॉक लाइंस है उनका फ्रीक्वेंसी या उसका इंटेंसिटी जो है बहुत वीक होते हैं, because very few molecule exist in V is equal to 1 state at normal temperature. So in case of your vibrational Raman spectrum, the anti-stock lines usually appear too weak, and only you will get the stock lines with adequate intensity. आपका जो stock lines होगा वो बहुत अच्छे से आपको appear होंगे, और आपकी anti-stock lines, I can say anti-stock lines आपका बहुत कम, या we can say कम observable होते हैं. Now the vibrational, therefore we can say the vibrational Raman spectrum of a molecule is basically very simple. इसका जो आपकी vibrational Raman spectrum जो होता है वो बहुत क्या होता है, simple होता है, और can say it will show a series of reasonable intense lines. So it will show a series of reasonable intense line
to the low frequency side of your exciting line with a much weaker, the mirror image of these lines that is towards the anti-stock lines, that is towards the higher frequency side. So you will get the lines with adequate amount of intensity towards the lower frequency side. It means our stock lines, and the mirror image, that is the line appearing on the right side, that is anti-stock lines, usually are very weaker, very weaker. Now, to understand this, the vibrational Raman spectrum, we will take some example, and we will see the Raman spectrum graph, and we will compare it with the IR graph. And now let's see what kind of information we can get from that kind of spectrum. देखते हैं, अगर हम एक मॉलिक्यूल लेंगे, उसके रमन स्पेक्ट्रम हम देखेंगे और उसको आईआर के साथ हम कंपेयर करेंगे, और वहां से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल सकता है वो हम देखेंगे. So let's see a Raman spectra of a molecule. तो यहाँ पे मेरे पास दो ग्राफ है, दो इंपॉर्टेंट ग्राफ है. द फर्स्ट वन, ये जो ग्राफ है, दिस इज द Raman spectrum of chloroform, that is CHCl3, or this is the IR graph of, that is infrared graph of your CHCl3. And we know that the CHCl3 is a symmetric top molecule. Our chloroform is a symmetric top molecule. And now we will compare these two and see what kind of information we can get from these two graphs. Now, when you observe this spectrum, that is the Raman spectrum of this chloroform, here we have a zero. Zero means here the zero we have inferred it with the line of your exciting radiation. इसको हम exciting radiation का line मानेंगे. ठीक है, ये this is our exciting radiation, and the peak appeared on this side. Now actually this is our stock lines. इसको actually ये हमारा spectrum इस तरह आता है. ठीक है, this is our Raman spectrum, and this is our actually right side में हमारा क्या आता है, ये आपका एंटी स्टॉक लाइंस आता है, और लेफ्ट साइड में हमारा स्टॉक लाइन आता है. तो ये जो लाइन है ये हमारे स्टॉक लाइंस है. ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी रमन स्पेक्ट्रम में हमने बताया कि हमारा जो एंटी स्टॉक लाइंस है वो थोड़ा वीक आता है, तो इसको हम थोड़ा राइट साइड पे दिखा रहे हैं. एक्चुअली दिस इज ओनली लेफ्ट साइड ऑफ योर एंटायर लेफ्ट साइड ऑफ योर एक्साइटिंग रेडिएशन, एंड दिस बिग लाइन इज आवर, the H0 is our exciting radiation flux. Now, in case of Raman, the chloroform, we have around 6 peaks. We have around 6 peaks, at which the first line is appear is 262 centimeter inverse. The second is 8366 centimeter inverse, and the third one is 8668 centimeter inverse. The fourth one 876 centimeter inverse, and this one is 1216 centimeter inverse, and finally we have P83019 centimeter inverse. And these all are stock lengths. ये usually radiation के इस साइड वाले लेंस हैं. ठीक है, तो इसकी कंपैरिजन में हमने बताया है जीरो के आपके लेफ्ट साइड में है, दिस इज अगेन 262, बट दिस इज आवर एंटी स्टॉक लेंथ. एंटी स्टॉक लेंथ, यूजुअली द इंटेंसिटी ऑफ द एंटी स्टॉक लेंथ इज very weak, or it is non-observable. So what we are seeing here is the intensity. ये जो आपका exciting radiation है ये usually appear होता है 488 nanometer of your argon ion laser light. तो इसको हमने यहाँ पे 0 बताया है, और 0 के कंपैरिजन में हमने ये सारा लाइंस आपको यहाँ पे दिखाया है जो कि आपकी क्लोरोफॉर्म की रमन स्पेक्ट्रम्स है, और ये सब आपके क्या है, टुवर्ड्स स्टॉक लाइंस है. द अदर वन, दैट इज द वन लाइन हियर अपीयर एट 262 सेंटीमीटर इनवर्स इज आवर स्टॉक या एंटी स्टॉक लाइंस is also it's also included in this graph. Now when we compare this graph with the IR graph of chloroform, what we seeing again here is that
the peaks are coinciding in both the cases. यहाँ पे देखो आपका यहाँ पे 3000 है, that is 3019 पे यहाँ पे आपका एक पीक मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे कुछ जगहों पे आपका जैसे कि यहाँ पे 2.4 I can say 2.456 सेंटीमीटर इनवर्स पे एक पीक मिल रहा है। ऑलमोस्ट वी कैन से इसके जो यहाँ पे इस अराउंड दिस 500 और 1000 के बीच में यहाँ पे कुछ पीक्स आ रहे हैं। तो सम पीक्स आर कोइंसाइडिंग, सो वी कैन से पीक्स आर सम पीक्स आर कोइंसाइडिंग इन बोथ रमन एंड आईआर। हम जब इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है कि some peaks are coinciding in both the case. Now, in case of vibrational spectrum, now अगर हम आईआर की कितने आईआर में कितने पीक्स आना चाहिए in case of chloroform, we know that in chloroform we have how many atoms? 3, 4, 5. We have n number of atoms, that the n is here is 5. Number of atoms in case of your chloroform is 5. Now we know that we know that also our chloroform is a linear molecule, therefore the number of fundamental vibration should be equal to 3n-6. तो ऐसे हम fundamental vibration calculate करते हैं. So n here is the number of atom. In case of chloroform it is 5, so 3 into 5 minus 6, it is 3, 5, 59. So in case of IR spectrum of chloroform हमें 9 fundamental vibrations मिलना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Because some peaks here are क्या करें, we can say some peaks here are doubly degenerate. यहाँ पे degenerate है, doubly degenerate, therefore we have only 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. कुछ peaks यहाँ पे क्या हुआ है, mix हुआ है, ठीक है. Now what important information we are getting from these two graphs is हमें क्या यहाँ पे important जो information मिल रहा है, that both the peaks are present in IR and Raman spectrum. अब आपके IR और Raman spectrum में दोनों peaks क्या है, coincide हो रहा है. It means both the vibrations, we can say, अब peak मिलने का मतलब क्या है, both the vibrations are Raman and IR एक्टिव. दोनों पीक्स क्या है, यहाँ पे रमन भी एक्टिव है और आईआर भी एक्टिव है. दैट्स व्हाई दोनों पीक उसी पोजीशंस पे आपके रमन में भी मिल रहा है, आईआर भी मिल रहा है. सो देयरफॉर द रिजल्ट इज नॉट दैट मच सरप्राइजिंग. सो वी कैन से द रिजल्ट इज नॉट सरप्राइजिंग. इस रिजल्ट ने हमें सरप्राइज नहीं किया है. व्हाई? बिकॉज the molecule do not have, because the molecule means our CHCl3 has no center of symmetry. Molecule that is CHCl3 has no center of symmetry. इस मॉलिक्यूल में हमारे पास सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि क्लोरोफॉर्म जो है वो सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल है. सो अगेन द mutual exclusion rule says that if the molecules have center of symmetry, then the vibrations which are Raman active should be IR inactive, and if the vibration is IR active, it should not be Raman active. Now, in case of chloroform, the molecule do not have center of symmetry, therefore both the vibrations can be Raman active or IR active. सो यहाँ से हमें ये इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि क्लोरोफॉर्म की केस में आपकी वाइब्रेशंस हैं, बोथ द वाइब्रेशंस आपको वही वाइब्रेशन रमन भी एक्टिव है और आईआर भी एक्टिव है, क्योंकि हमें रमन में भी वही पीक्स मिल रहे हैं और आईआर में भी वही पीक्स हमें देखने को मिल रहा है. Therefore, from this conclusion we say that if the molecules do not have center of symmetry, the vibrations can be both Raman and IR active. So this is how we can get the vibrational Raman spectrum of a molecule. So that's all in this lecture. In our next lecture,
we will discuss about the vibrational rotational Raman spectroscopy, or we can say rotational Raman fine structure. Thank you.